इस वक्त हम बात करेंगे वाशिंगटन से मुंसलिक वाशिंगटन में विल्सन सेंटर से मुंसलिक तज्जियाकार माइकल कुगलमैन से, जो जनूबी एशियाई उमूर पर गहरी नज़र रखते हैं और पाकिस्तान के मामलात की ख़ास तौर पे एक माहिर यहाँ पे समझे जाते हैं। Michael, welcome to View 360. Benazir Bhutto was a towering figure on the international level. Now, at this point, we're seeing that it was the murder of a former prime minister and a former president has been declared wanted. For somebody who is sitting in Washington, D.C. and looking at this, what does it say? Well, I think on one level it's a positive development simply because Pakistanis have been waiting for many years for there to be a verdict for the case regarding her assassination. However, I do fear that this could be a case of justice denied rather than justice served, simply because we still don't know who assassinated Benazir Bhutto, and we still don't know who orchestrated the assassination. I mean, this case gave some pretty strict, stiff prison sentences to two security officials for negligence. And of course, Pervez Musharraf was declared a fugitive, but he already spends his time outside of Pakistan. So I think that for Musharraf, this case is a blow to his reputation and to his image. But at the same time, it really won't. I don't think it will have that much of an impact on him because he's outside of Pakistan anyway. So in that sense, it's a mixed blessing, I think, at the end of the day when it comes to this case. माइकल कुगलमैन जी कहते हैं कि मुस्बत पेशरफ्त तो है इस लिहाज से कि केस का फैसला आया जिसका बहुत इंतज़ार था, लेकिन ना तो ये साबित हो सका कि कत्ल किसने किया और किसने करवाया, तो एक तरह से जस्टिस डिनाई हुआ है, जस्टिस नहीं हो सका। और दूसरा ये भी कि सदर परवेज़ मुशर्रफ तो बहुत सबक वैसे ही पाकिस्तान से बाहर गुजारते हैं, तो उनको इंसाफ के कटहरे में लाना यहाँ पे माइकल कुगलमैन का भी ख्याल है कि एक बड़ा इशू है, लेकिन उनकी रेपूटेशन को, साबिक सदर की रेपूटेशन को इससे ज़रूर धचका लगेगा। Michael, tell us a little bit about how you see this fitting into the narrative, the historical narrative of Pakistan. Well, I think that if you want to talk about perceptions of Pakistan here in Washington, how it's perceived, I think that unfortunately this will play to the idea that when it comes to democracy and democratic ideals, that there still are some serious shortcomings in the sense that you have a huge crime, the assassination of a former prime minister, and yet it takes many years for there to be a verdict, and when there finally is a verdict, there's still a sense of not knowing exactly what happened. And I think that unfortunately, despite the fact, in my view, Pakistan has experienced significant progress in democratization, particularly over the last 8-10 years or so. I think that many here in the United States will see this as another case of the limitations of Pakistan's democracy, which is a shame, but I think in some ways may reflect what actually be happening on the ground. तो माइकल कुगलमैन कहते हैं कि जहाँ तक पाकिस्तान के इमेज की बात है, पाकिस्तान से बाहर तो इतना बड़ा जुर्म हुआ, लेकिन चूंकि क्लैरिटी अभी तक सामने नहीं आई, इसलिए पाकिस्तान की में जमहूरियत ने अगरचे बहुत तरक्की की है, पिछले कुछ सालों में मजबूत हुई है, लेकिन फिर भी ये तासुर नहीं इस फैसले से मिल रहा कि पाकिस्तान की जमहूरियत उस जगह पर खड़ी है जहाँ पर उसे आज़ादी के इतने सालों के बाद होना चाहिए। और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में ये एक महदूद, उसकी जो सलाहियत है, डेमोक्रेसी की महदूद क़ुव्वत है इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत की, उसकी तरफ ज़्यादा इशारा देती है। माइकल कुगलमैन, थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइट, वी रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू।